Hi friends, I'm Dr. Bhavesh Gupta, hair transplant surgeon practicing in Kharghar area of Navi Mumbai. Today we are making a video on post-operative instructions. सर्जरी के बाद में आपको कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं डे बाय डे वी विल सी इन दिस वीडियो. सो स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेट. नाउ जिस दिन आपकी सर्जरी होती है, जिस दिन आपकी सर्जरी का फर्स्ट सेशन हुआ है, दैट डे विल बी कंसिडर्ड एज द डे 1 ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांट. सपोज इफ़ यू हैव गॉट योर सर्जरी डन इन 2 सिटिंग्स, अगर आपकी सर्जरी 2 सेशन में हुई है, जो पहला दिन होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डे 1, जो सेकेंड डे होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज डे 2 एंड देन डे 3, डे 4, डे 5, so on and so forth. So now we will read all the instructions one by one and I will try to explain you very clearly in this video. We'll start with the instruction number 1. You can wear a simple loose cap to cover your head immediately after surgery. It will be given to you at the center itself. So आपकी सर्जरी ख़त्म होने के बाद में आपको एक हेड कैप दिया जाएगा हमारे क्लिनिक से. सर्जिकल हेड कैप बोलते हैं हम इसको. That is a very semi-permeable cap. Air and water can pass through that cap. That is why we give that cap to you after your surgery to wear it for at least 4 days after hair transplant. 4 दिन तक आपको सर्जरी के बाद में वही कैप पहनना है. सेकेंड चीज़, वो कैप पहनने के बाद में अगर समझो बाहर अगर बारिश हो रही है, यू कैन नॉट गो अंडर द रेन बिकॉज इट विल मेक योर हेयर्स और ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स वेट. इंस्ट्रक्शन नंबर 2. यूज आइस कोल्ड कंप्रेस ऑन द फोरहेड फॉलोड बाय फर्म फिंगर मसाज from on the forehead working from center to side for 5 minutes at least for 2 to 3 times a day. This maneuver will reduce the swelling after surgery. So सर्जरी के बाद में ये स्वाभाविक है कि आपको थोड़ा बहुत स्वेलिंग आने वाला है अपने फोरहेड पे और कंप्लीट फेस पे. इस स्वेलिंग को अगर हमको मिनिमाइज करना है तो जस्ट इंटरलॉक, देयर इज अ सिंपल मैन्यूअर फॉर इट. जस्ट इंटरलॉक योर फिंगर्स, पुट सम कोकोनट ऑयल और वैसलिन ऑन योर थंब and just keep your thumb in front of your forehead in the center and just massage it from center to side. इसको मसाज करना है ऐसे कम से कम दिन में 5 मिनट के लिए 2 से 3 बार तक. Make sure that whenever you are performing this maneuver, stand in front of a mirror and then do it. Why in front of a mirror? Because if you are in front of a mirror, you will understand that where your thumbs are exactly, because your scalp will be numb for at least a week after surgery. So आपको पता नहीं चलेगा कि आपका हाथ ग्राफ्ट पे लग रहा है या अपने फोरहेड पे लग रहा है. जो ट्रांसप्लांट किए हुए ग्राफ्ट है उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसलिए वी एडवाइज यू टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एंड देन डू दिस मैन्यूअर. इंस्ट्रक्शन नंबर 3. 2 days ऑफ रेस्ट एट होम इज एडवाइजेबल दो यू कैन डू योर रूटीन वर्क इन ए डस्ट फ्री एनवायरनमेंट. 2 दिन तक हम आपको रेस्ट के लिए बोलते हैं, बट यू कैन स्टिल डू योर वर्क लाइक वर्क फ्रॉम होम, वर्क इन फ्रंट ऑफ ए कंप्यूटर, और कोई लिखा पढ़ी का काम हो तो आप कर सकते हैं. अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ ए होम रेस्ट, दिस इज़ नॉट ए बेड रेस्ट. सो जो आपका रूटीन चीज़ है, रूटीन वर्क है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट कोई स्ट्रीनस एक्टिविटी लाइक स्विमिंग, लिफ्टिंग वेट्स, यू आर नॉट सपोज टू डू एटलीस्ट फॉर 1 week आफ्टर ट्रांसप्लांट. इंस्ट्रक्शन नंबर 4. Self irrigation of scalp with the provided syringe and saline solution has to be done every 30 minutes for first 2 days on the day 1 and day 2 of transplant and then every 2 hourly for next 2 days. So जिस दिन आपका ट्रांसप्लांट होता है उस दिन आपको हर आधे घंटे में सलाइन से अपने सर पे इरिगेट करना है. वी विल गिव यू ए स्प्रे बॉटल और ए सिरिंज. सलाइन को सिरिंज में लेना है और हर आधे घंटे में आपको अपना स्कैल्प इरिगेट करना है जहाँ पे अपन ने ट्रांसप्लांट किए हुए हैं ग्राफ्ट उस एरिया में. On the day of transplant every 30 minutes and from next day for first and second day after transplant every second hourly. All right, so we'll start with the instruction number 5 now. You can use 2 regular sized pillow on the back of your head while sleeping. This will further minimize the swelling. सोने के टाइम पे आपको अपने सर के नीचे 2 पिलो रखना है. This will make sure that your head is elevated a bit while you are sleeping and this will minimize the swelling at a faster pace. Instruction number 6. Sleep on the back and do not sleep on the sides or front face which might disturb the implanted graft. सोने के टाइम आपको ये ध्यान देना है कि आप सीधा सोएं. आपको एक साइड टर्न करके नहीं सोना है या तो उल्टे मुंह करके नहीं सोना है. That might disturb the implanted grafts. जो ग्राफ्ट हमने इम्प्लांट किए हुए हैं उनको डिस्टर्ब कर सकता है ये पोजिशन. A simple maneuver to avoid this is while you are sleeping straight, just keep 2 pillows, one on your right side of your body and one on the left side of your body. This will make sure that you don't turn while you are sleeping. We are starting with instruction number 7 now. You have a bandage on the operated area which will be removed after 2 days. So हम ट्रांसप्लांट करने के बाद में आपको एक बैंडेज लगाते हैं आपके फोरहेड पे. It starts from the donor area and comes to your forehead.
this bandage has to be removed after 2 days. Now if you are a local patient, if you are from Mumbai or if you are from Navi Mumbai itself, you can come to clinic and we will remove the bandage for you. If you are not a local patient and you are flying the next day of surgery, or you are not in the city on the second day of surgery, then you can remove the same bandage at your home. You can ask anybody of your relative or your family person to remove it for you. It is just very easy. It's a paper bandage. You have to just cut it in between with the scissor and then just peel it off. After you remove the bandage, just try to apply the antibiotic solution what we have given you from the clinic at least 3 to 4 times on the donor area. Nothing needs to be applied on the transplanted area. Starting with the instruction number 8, no head bath for at least 6 days. So सर से आपको अगले 6 दिन तक नहाना नहीं है. And all the remaining post-operative instructions we will discuss it after completing all the points here. Instruction number 9, this is a very important instruction. No hair growth will be noticed for 3 to 4 months. Hair growth will be after this interval and depends on the individual's response to surgery. ट्रांसप्लांट करने के 3 से 4 महीने तक आपको कोई हेयर ग्रोथ दिखने वाला नहीं है. 4 महीने बाद आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स ग्रो होना शुरू होंगे. सो 5वें महीने में वी एक्सपेक्ट दैट इट शुड बी समवेयर अराउंड 1 सेंटीमीटर. Until 6th and 7th month, it should be somewhere around 2 to 3 centimeters. So make sure that you do not panic after 3 months of surgery that कुछ growth दिख नहीं रहा है हमको. It will be seen only after 3 to 4 months of surgery. You will start to see the growth only after 3 to 4 months of surgery. 10th point, dryness of scalp might cause itching. Contact the doctor in such event. ट्रांसप्लांट करने के बाद में आपका स्काल्प ड्राई हो सकता है. दोनों ही एरिया, ट्रांसप्लांटेड एरिया एज वेल एज डोनर एरिया, ये ड्राई होना नॉर्मल है. जब भी स्किन ड्राई होती है, इट कैन कॉज रेडनेस, इट कैन कॉज इचिंग. 2 सिंपल ट्रिक है ये अवॉइड करने के लिए. जस्ट टेक सम वार्म कोकोनट ऑयल, टेक इट इन योर फिंगर्स आफ्टर क्लीनिंग योर हैंड एंड अप्लाई इट ऑन द डोनर एरिया ओवरनाइट. In the next day morning you can shampoo your head. This is only for donor area. For transplanted area we will discuss it after completing all the points. Second trick is to use aloe vera gel. Just apply aloe vera gel on the donor area जहाँ से हमने hairs extract किए हैं, and then sleep off overnight and next day morning you can shampoo your head. Aloe vera gel and coconut oil will make sure that your itching is reduced to a certain extent. Instruction number 11, topic hair fibers. Use of hair fibers, hair building fibers after transplant. So एक बात समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसप्लांट करने के बाद डोनर एरिया इज़ द एरिया विच विल लुक वियर्ड. ट्रांसप्लांटेड एरिया इज़ नेवर द एरिया विच विल लुक वियर्ड. यहाँ से वी हैव एक्सट्रैक्टेड thousands of grafts. That is why this area tends to appear little reddish. It can appear little bald. This appearance can go on for a month or 2. So just try to order hair building fibers online. It is available on Amazon, it is available on Flipkart or any other online store. And only after 1 week of your transplant, you can start sprinkling that hair building fibers on the donor area. That will make sure that donor area looks good. Nobody will be able to make out that हमने कुछ transplanted hairs वहाँ से extract किए हुए हैं. It will not appear weird. So if you are joining your job, if you are joining your office immediately after surgery, this hair building fibers will definitely help you. Second thing is hair building fibers जो होते हैं अलग अलग कंपनीज के आते हैं, but there is a company known as Topic which produces a very good hair building fiber. ये जो fibers होते हैं जब आप sprinkle करते हैं अपने hairs के ऊपर, this will stick to your existing hair and it will make the area look much more denser as compared to normal. तो ट्रांसप्लांट करने के 1 से 2 महीने तक, जब तक आपका डोनर एरिया नॉर्मल नहीं होता, तब तक आप ये हेयर बिल्डिंग फाइबर्स यूज़ कर सकते हैं. एंड द लास्ट इंस्ट्रक्शन, कीप फॉलोइंग विद अस by sending your latest hair growth pictures on our official number 7506808008. ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको 3 बार अपने फ़ोटोज़ भेजने हैं हमको. पहला फ़ोटो आप भेजेंगे ऑन द 15th डे ऑफ ट्रांसप्लांट, जब आपके पूरे स्कैब्स जो है ट्रांसप्लांटेड एरिया में क्लियर हो जाएंगे. अगर वो क्लियर नहीं हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे कि कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है या तो कोई और ट्रिक्स या मैन्यूअर आपको करना है स्कैल्प को क्लीन करने के लिए. सेकेंड फोटो यू विल सेंड अस एट द एंड ऑफ 3 to 4 months ऑफ ट्रांसप्लांट. ये हमको बताएगा कि आपने अपना स्कैल्प कितने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है. थर्ड फोटो आप जो हमको भेजेंगे दैट यू विल बी सेंडिंग अस आफ्टर 6 months ऑफ योर ट्रांसप्लांट. 6 महीने बाद ट्रांसप्लांट के आप हमको एक फ़ोटो भेजेंगे जिसमें हम आपको वेयर वी विल हैव ए रफ आइडिया ऑफ
द क्वालिटी ऑफ हेयर ग्रोथ व्हाट यू हैव अचीव्ड आफ्टर ट्रांसप्लांट. सो अगर हमारे डॉक्टर से कोई मेडिसिन चेंज करना है या कोई लोशन चेंज करना है, दे विल एडवाइज यू इमीडिएटली आफ्टर सीइंग योर पिक्चर्स. So hi guys, now we are starting with the head washing protocol after hair transplant surgery. In this protocol we are considering that the surgery has been done in only single day or only in single session. That is why we have made a protocol like this. Suppose the surgery has been done in 2 sessions or in 2 days, all the numbers of days will be increased by +1. So it will be 6 + 1 or 8 + 1 or 10 + 1. Suppose if the surgery has been done in 3 sessions, all the number of days will be increased by +2. And suppose the surgery has been done in 4 sessions, then all the days will be increased by +3. So in this scenario we are considering कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ एक सेशन में या एक दिन में कंप्लीट हो चुका है. So on the first day of surgery or on the day of surgery, day 1, saline irrigation every 30 minutes. So जिस दिन आपका सर्जरी होता है, ऑन द डे ऑफ सर्जरी सलाइन इरिगेशन आपको एवरी 30 मिनट्स करना है, जो सलाइन बॉटल और जो स्प्रे हमने आपको दिया है उससे. ऑन डे 3 ट्रांसप्लांट करने के 2 दिन बाद इट विल बी द लास्ट डे ऑफ योर सलाइन इरिगेशन. सो जिस दिन ट्रांसप्लांट हुआ है एवरी 30 मिनट्स करना है, और जैसे कि अपन ने पहले डिस्कस किया हुआ है उसके 2 दिन तक एवरी सेकेंड आवरली आपको सलाइन इरिगेशन करना है. And on the day 3 itself we will call you for dressing removal. If you are a local patient, you will come for dressing removal. If you are not, then we will instruct you how to remove the dressing at home. On day 6 it will be your first head bath on the day 6 after transplant. So on this first head bath there are 3 instructions what you are supposed to be following. The first is warm water. आपको नहाना है गुनगुने पानी से. It is warm water, it is not boiling water. The second instruction is no scrubbing. You are not supposed to be scrubbing your scalp on the first head bath. And the third instruction is alternate days. So all the alternate days you will be having head bath. On rest of the days you can have your normal body bath, but other than your you are not supposed to be washing your scalp. So it is only on the alternate days from the day 6 that you will be washing your scalp. So on day 8 of transplant, the second head bath will be there, and all the instructions has to be repeated which you have followed on the day 6th. On the day 10th it will be your third head bath, and we have 4 new instructions. The first instruction remains the same, warm water से आपको नहाना है. Second instruction, you are supposed to be applying warm coconut oil a night before. Means on the 9th night, day 10 को आप वॉश करने वाले हैं. 9 तारीख the day 9th, डे 9 के रात को आपको अपने सर के ट्रांसप्लांटेड एरिया एज वेल एज डोनर एरिया उस पर आपको वार्म कोकोनट ऑयल लगाना है, और लगाने के बाद में सो जाना है. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू हैव टू शैम्पू. सो हम आपको शैम्पू प्रिस्क्राइब करेंगे, एंड दैट शैम्पू यू आर सपोज टू बी अप्लाइंग 15 मिनट्स बिफोर बाथ. नहाने से 15 मिनट पहले आपको वो शैम्पू लगाना है. वेट फॉर 15 मिनट्स एंड देन टेक बाथ. एंड व्हाइल टेकिंग बाथ यू आर सपोज टू बी डूइंग जेंटल स्क्रबिंग. सो जेंटल स्क्रबिंग मीन्स जेंटली आपको स्क्रब करना है अपने स्कैल्प को, सो दैट ऑल द स्कैब्स फॉल ऑफ. धीरे धीरे जो स्कैब्स आपके स्कैल्प पे रह गए हैं वो स्कैब्स निकलने चाहिए, एंड दैट विल बी रिमूव्ड वंस यू स्टार्ट स्क्रबिंग. सो स्क्रबिंग हैज टू बी एक्सट्रीमली जेंटल. आपको जोर से स्क्रब बिल्कुल नहीं करना है. कुछ स्कैब्स आपके डे 10th को निकलेंगे, कुछ स्कैब्स विल बी रिमूव्ड ऑन डे 12th, एंड सम स्कैब्स विल बी कमिंग आउट ऑन डे 14th आफ्टर ट्रांसप्लांट. And now the same instructions has to be repeated on the day 12th of your transplant. एक बात आपको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, जब आप स्क्रब करते हैं along with the scabs, बहुत सारे हेयर जो हमने ट्रांसप्लांट किए हुए हैं, these will tend to fall off. There is no need to worry for that. The hairs will fall off, but the bulb of the hair, the roots of the hair will still stay inside the scalp. So no need to worry. It is completely normal. And on the day 14th of the transplant, again all these 4 instructions needs to be repeated. ये same instructions आपको repeat करना है, and we expect that on the day on the 5th head, this will be your 5th head bath. By day 14th, all the scalp, your complete scalp should be almost clear. डे 14th आते आते आपका स्कैल्प कम्प्लीटली क्लियर हो जाना चाहिए. एंड डे 15th को एज वी हैव डिस्कस्ड बिलो कि आप हमको पहला पिक्चर भेजेंगे ट्रांसप्लांट के बाद का. देन डे 18th, इफ द सर्जरी इज डन इन डे 1, फ्रॉम डे 1 टू डे 18th आपको कोई मेडिसिन जो हमारे एंटीबायोटिक और पेन किलर्स चल रहे थे वो तो 3-4 दिन में बंद हो जाएंगे. इसके बाद में आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है. Only on day 18th you will be starting the hair medicines. Hair medicines can include 3 things:
The first thing is vitamins, it is called as hair fat. The second thing is finasteride or dutasteride, and the third thing is minoxidil spray what we will be prescribing you. ये तीनों मेडिसिन आपके डे 18th ऑन द डे 18th ऑफ ट्रांसप्लांट ये तीनों मेडिसिन आपके शुरू हो जाएंगे. एंड इसके बाद जब आपका स्कैल्प क्लियर हो जाता है, इसके बाद में शैम्पू और हेयर ऑयल ये सिर्फ हफ्ते में एक बार करना है फ्रॉम डे 18th. जब तक आपका स्कैल्प क्लियर नहीं होता है तब तक यू आर डूइंग योर हेड बाथ एवरी अल्टरनेट डे. बट और शैम्पू भी आप डे 10th के बाद में एवरी अल्टरनेट डे कर रहे हैं. बट जब आपका स्कैल्प क्लियर हो चुका है, इसके बाद में एवरी वीक ओनली वंस यू आर सपोज टू बी डूइंग योर ऑयलिंग एंड शैम्पू. सो ऑयलिंग हमको उसी दिन करना है, उसी रात को करना है जिस दिन अगले दिन हम लोग शैम्पू करने वाले हैं. सो कमिंग टू डे 20th, सो वी एडवाइज आवर फर्स्ट PRP सेशन ऑन द डे 20th. Again, a thing about PRP is we don't advise PRP for every patient. We examine you clinically before transplant and we will let you know whether PRP is required for your case or not. If it is required, generally we give PRP, the first PRP on day 20th and second PRP session will be on day 40th. This can change by a day or two depending upon our schedule, but on an average we will do your PRP, the first PRP on day 20th and second PRP on day 40th. So now this speaking about the three medicines what we have discussed before: hair fat, finasteride or dutasteride, and minoxidil spray. All these three medicines you are supposed to be keeping on the top of your refrigerator in the kitchen. Now why on the top of the refrigerator? Because every morning once you open your refrigerator for your breakfast, our medicines will be right in front of your eyes and you will not miss taking it. So it will become a habit for you and it will work nicely if you take on the same time every day. सो गाइस, हमने अपना पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस 1 by 1 कंप्लीट कर लिया है एंड वी हैव कंप्लीट आवर हेड वॉशिंग प्रोटोकॉल आफ्टर ट्रांसप्लांट. ये दोनों ही चीज़ हमने ये वीडियो में कवर कर ली है. इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाता है, यू आर सपोज टू बी कॉलिंग ऑन आवर ऑफिशियल क्लिनिक्स नंबर, दैट इज 750-680-8008 एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. थैंक यू.